Hi, this is Jyotsna here. Tonight I'm sitting at Hotel Hyatt Centric in New York by the Wall Street, and we are the part of Bharat Mahotsav that we are celebrating for last 2 days, and now we'll be celebrating for next 3 days as well, 2 days more rather. And I'm sitting with some eminent personalities here, and I really want to bring focus on them because they have been doing some wonderful work in terms of bringing a different kind of charisma to the persona of people by what they do. So let me first introduce you to esteemed guest here sitting here, famous fashion designer Rina Dhaka. Rina, this video will go on multiple social media platforms or maybe on media platforms as well. I would want you to give a little brief introduction about yourself to the people who may want to know you more. So thank you very much for giving me this great introduction. I'm very flattered. I'm one of the many artisans of my country. My name is Rina Dhaka. I came about in the early fashion scene of Indian fashion scene. So I may be called one of the early birds or a pioneer, as some of you nicely put it. Fashion today is very diverse in India. It is very international. We have so much of talent, as well as the fact that today there is a bridge which joins between the artisan, the designer, and the international world as one. And this is one such story wherein I am a part of. So Rina, you would be doing a fashion parade tomorrow at the famous Times Square in New York, Manhattan. And the thing is, you're popular for a different style of clothing. Exactly. Please give some more insight about that. So when I came, and I must compliment you first for what you are wearing right now. It is really, looking so comfy and classy at the same time. I'm grateful. This is made by the tribal belt of weavers of Jharkhand. Wow. Not the complete outfit, but the fabric which is here. That is probably the reason for the comfort. So I try to blend my own. I'm a very much a child of India who grew up with Western clothing, Western sensibilities, thinking in English, studied abroad. So when I had to transition into making traditional Indian clothes, at that point our Indian clothes were considered boring, not fun enough to wear. Of course, today the world has changed and there is a great interest in craftsmen, because the story has been well told. It has been put on runways, it has been worn by celebrities worldwide. And so what brought me initially into this scene was my marrying of the old and the new. And I feel that represents, it's what I am. I like comfort and fit of the Western world, but I like tradition and I can never give up on that. And there is a world out there I have a lot of hunger to be learning more and more. It can never be ever enough. What we can learn from our weavers, from our craftsmen, from our tradition, from our history, is just an unending Pandora of surprises. Awesome. This is so good to hear the connects you have with the real people who actually need the right promotion, who actually need the support. And one way or other, you are doing a great work to uplift that humankind who needs the right attention. So, you are in United States of America here for a couple of days now. But how about your expansion in terms of connecting with the right people here, showcasing your, fashion, collections, So and of course, connecting with the right people so that we promote your stuff here? How do we do that? What's your vision? So I have in the past, I've done short stints in America. I was once invited to Miami Fashion Week and I won the Fashion Week there. So I got myself a star of Miami. Awesome. 2004. And I had very prestigious jury where there was Saks, Bayer, Michael Finks, Fern Malice. They were my jury. Even Sabyasachi was with me as one of the other Indian designers. Unfortunately, my life kept me, let's just say, into a chef who makes the food himself. So I've not been a very good delegator. I do work on and off with Anthropology USA. They have many stores. I work on their collections.
and I have been very fortunate. I have also done road shows here in the past. I would love to maybe one day come back. I'm not sure which fashion week I would do. I've done London Fashion Week, maybe the New York Mercedes Fashion Week. If I feel I can be a, put in, I can give it the time and energy required for retail and its pursuit. I worked, of course, with Indian brands and Indian designers over the years here. But I love America. I have always enjoyed my time here. I'm very grateful to our clients who are here, who have supported me in the past. And how's your feeling joining in this Bharat Mahotsav this time? So Bharat Mahotsav, I have worked with a few seasons. There is a sense of simplicity to their approach, which I enjoy that. It's unique for us because we work in a different pace of fashion. So I look at it more as a kind of a window to another audience. It's not the usual audience of fashion. It's not even the usual players of fashion. So, but the approach is there and there is a reach. And I think it's high time, as we're talking more of the bridging of the gaps. Right. So this is one way of me looking at it, to present fashion and my influence of my work, but to a different kind of an audience, to like say a Times Square, so like that. Rina, thank you so much. I am simply in awe of your simplicity, I must say. Thank you. Very humble and modest person you are. Thank you. Of course, fashion designers, when we speak about, there is a different mindset that people carry about them. Yeah. After meeting you, it's completely changed. My perception personally has changed. To be honest, I have a different persona myself. And for me, to actually love you and respect you, I appreciate I would compliment you. You are an amazing person. I'm grateful for that. From the personal level of connect, I would say, and of course from your creative aspects, and for the connect that you have with the right people to promote them, as you speak about promoting the tribals with the tribals of India. You're wearing this amazing It's very attire. thankless of us to just take the credit ourselves, because This without is this them, is there so is no nice. story We are to be proud told. of you. We wish you all the very best, Rina, and definitely this message will go out clear and loud to my people, and of course they will have the meaning set in the right form. Thank you. Appreciate. Thank you Thank so much for sparing your time talking to me, and of course Rina Dhaka, Bollywood celebrity fashion designer, पर इनकी भी एक अलग कवायद होती है. ये अपनी एक पहचान बनाते हैं, दिल में ये भी प्यार रखते हैं, निखारते हैं उन सूरतों को जिनको बड़ी करीबी से पहले देखते हैं, फिर उनके लिए निहारते हैं कुछ कपड़ों को और बनाते हैं बड़ी तबीयत से. अच्छी खासी शख्सियत हैं ये अपने आप में, और आज इनसे मिलके दिल खुश हो गया. अब मैं किसी और से आपको मिलवाऊंगी. इनका नाम है उन्नति सिंह राजपूत. करेक्ट मी उन्नति जी? उन्नति सिंह. ओके, ठीक है, राजपूत नहीं है, मतलब उन्नति सिंह इनका नाम है. और ये और एक अलग ख़ास शख्सियत हैं जिनसे मैं आज अब आपकी बात करवाने वाली हूँ. इनका क्या बैकग्राउंड है, पहले तो हम इनसे ही जानेंगे, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको मिलवा किससे रही हूँ. नमस्ते. इस समय आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पे हैं. ऑफ कोर्स सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक कहीं भी जा सकता है ये मैसेज. आई वुड लाइक टू हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम यू. हिंदी और इंग्लिश जैसा कंफर्ट हो, हमारे लोगों से कनेक्ट करिए. जी, उन्नति सिंह, मैं भारत की बेटी हूँ, और लोगों जो सुंदर भगवान ने जिनको बनाया उनको सुंदर रखने का काम मुझे दिया गया है. तो आई एम इनटू ब्यूटी इंडस्ट्री. तो जितने सुंदर लोग उनको खूबसूरत रखते हैं, निखारते हैं, और जितने भी शोज़ होते हैं, फैशन शोज़ होते हैं, उनमें हमारा काम होता है कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनके काम को और बेहतरीन तरीके से पेश किया जाए. यहाँ पर रीना जी की वजह से मैं हूँ, रीना ढाका जी. आई वॉन्ट टू थैंक हर. बिकॉज ऑफ हर आई एम इन न्यूयॉर्क टुडे फॉर भारत महोत्सव. उन्नति जी, आपका मैंने सुना है कि आपके पर्सनल स्कूल्स हैं वर्ल्ड वाइड. कॉस्मेटोलॉजी, मेकअप आर्टिस्ट को आप प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड वाइड. थोड़ा इनपुट दीजिए ज़्यादा. कभी भी अगर आप देखेंगे ब्यूटी इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं, ब्यूटी का मतलब लोग मेकअप ही समझते हैं, जबकि मेकअप एक छोटा सा पार्ट है उसका. आपकी जिस तरह से आपकी पूरी बॉडी के पार्ट्स हैं, फेस है, आपका हेयर है, उस तरह से हर चीज़ इम्पॉर्टेंट रखती है. मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, हेयर कट, आपकी स्किन, आपके नेल्स, हर चीज़ की इम्पॉर्टेंस होती है. तो हम लोग हर सेगमेंट के जो आपके पार्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स देते हैं, उनके बारे में बताते हैं, और ब्यूटी इंडस्ट्री में उनको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है वो बताते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग एंड अर्निंग. उन्नति जी, कितने सेलिब्रिटीज़ को आपके स्टूडेंट्स ने और आपने खुद
आपने तो एक्चुअली ब्यूटिशियंस को प्रोड्यूस किया है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट को प्रोड्यूस किया है, इफ आई से दैट। कितने नंबर अगर मैं बोलूँ, कुछ नाम बताइए, कैसे कैसे आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड आर्टिस्ट जिनको आपने और निखारा है उनके रूप को? बहुत सारे बॉलीवुड आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हम लोग टाइम्स फैशन वीक भी करते हैं जो बॉम्बे में होता है और बहुत ही फेमस है अपने फैशन सेंस को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे फैशन वीक होते हैं, बट टाइम्स फैशन वीक की एक अपनी अलग पहचान है, जहाँ पर जितने भी डिज़ाइनर्स जो स्टैब्लिश हैं, अपकमिंग हैं, वो सभी शोकेस करते हैं अपनी ड्रेसेस को, और सारे सेलेब्स वॉक करते हैं, क्योंकि बॉम्बे शहर है सेलिब्रिटीज़ का। तो जैसे मलाइका अरोड़ा जी हैं, देन आपके जो है सोनाक्षी सिन्हा हैं, और बहुत सारे हैं, करिश्मा कपूर जी हैं, बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं जो वॉक करते हैं, उनको हम लोग सब स्टाइल करते हैं। इसके अलावा जितने सुपर मॉडल्स होते हैं उन सबको भी हम स्टाइल, वो किसी भी आर्टिस्ट से कम नहीं होते, सेलिब्रिटीज से कम नहीं होते। सुपर मॉडल्स दे गिव देयर 100%, बिकॉज ऑफ देम हमारी पहचान भी होती है। तो जब वो लोग वॉक करते हैं, अपना काम देख के हम लोग बहुत खुश होते हैं। बहुत अच्छा। उन्नति जी, अगर आपसे जुड़ना हो और आपके शिष्य बनना हो लोगों को, कैसे जुड़ेंगे? बहुत छोटी सी है, आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। उन्नति सिंह ऑफिशियल पे जाइए, छोटा सा मुझे एक मैसेज कर दीजिए, बस हो गया। आप जिस भी कंट्री में हो, जिस भी शहर में हो, वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं हम उनसे आपको जोड़ देंगे, क्योंकि अभी मैं चेयर भी होल्ड करती हूँ इंडिया के लिए, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट जो स्टाइलिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, जैसे आयरलैंड से हमने शॉन टैफ को बुलाया था इंडिया में, हमने 10 सिटीज़ में टूर किए थे, ही इज़ द वर्ल्ड चैम्पियन। उनके साथ हम लोगों ने हेयर कट की एक ट्रेनिंग का कोर्स किया था पूरे इंडिया में, 10 बिग सिटीज़ में। ऐसे ही अभी हमने डोमिनोज को बुलाया था, ही केम टू श्रीलंका, जो कि वर्ल्ड चैम्पियन है मेकअप के। और इसी तरह से अलग अलग आर्टिस्ट को हम लोग इनवाइट करते हैं इंडिया में, और हम करते इसी तरह से इंडियन आर्टिस्ट बाहर जाके भी परफॉर्म करते हैं। हम लोग लंदन में और अलग अलग जगह शो करते हैं। अब न्यूयॉर्क में ही हम लोग कल शो करने वाला है। मैं मेकअप एंड हेयर पार्टनर फॉर भारत महोत्सव क्या बात, विच इज़ हैपनिंग एट न्यूयॉर्क टाइम्स पर। थैंक यू सो मच उन्नति जी। मेरे फ़ोन की बैटरी जा रही है। इनफैक्ट मुझे आपकी स्टूडेंट कम पार्टनर से भी बात करनी थी, जिनका नाम साना है। बहुत खूबसूरत लग रही हैं और बहुत बढ़िया मेकअप इन्होंने आज किया हमारे MC का इवेंट का। तो मैं एक्चुअली अगले वीडियो में आऊँगी, क्योंकि इसका बैटरी का मेरे फ़ोन की बैटरी जा रही है। बट आई हाईली अप्रिशिएट यू टेकिंग योर टाइम आउट मुझसे बात करने के लिए और मेरे ऑडियंस से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और मैं आपको फिर दोबारा से और अगले कन्वर्सेशन में थोड़ा और इलाबोरेट करेंगे अपनी कन्वर्सेशन को। थैंक यू सो मच।